Boost your vocabulary for better presentation. We have already done several words, and I'm very happy the children are really going through this and getting advantage. Yeah, so today's word is compassion. Compassion simply means a strong feeling of sympathy for people who are suffering and desire to help them. किसी को help करने की सहानुभूति होना, kindness होना, that is called compassion. Everyone should have compassion. एंड कंपैशंस का सिनोनिम्स होगा सिंपथी. ध्यान दें, इसको सिंपैथी नहीं पढ़ेंगे, इट इज़ सिंपथी. सिंपथी, एम्पथी, अंडरस्टैंडिंग, पिटी, केयर, सेंसिटिविटी एंड काइंडनेस. और इसे बनाएंगे हैज़ हैव से, लाइक आई हैव कंपैशन, आई हैव सिंपथी, आई हैव एम्पथी, आई हैव अंडरस्टैंडिंग. दिस वे आई हैव पिटी, वी शुड हैव केयर, ही हैज़ sensitivity, he has kindness. And when you talk of compassion, compassion is actually noun. When you have to change into adjective, so it will be compassionate. Compassion will become compassionate, right? The person, like he is compassionate, he has compassion but he is compassionate. Sympathy, he has sympathy but he is sympathetic. We should be sympathetic to the needy. He has empathy but he is empathetic. Yes, he has sensitivity but he is sensitive, right? He is sensitive. He has kindness but he is kind. He is kind. Yes, this is the difference. These are adjective. Yes, and this one is noun. And the antonym of compassion will be indifference or cruelty. Yes, there are some people who have indifference and due to them others have to face problem. Yeah, we should not have cruelty, we should not have indifference for the people, we should have compassion. Yes, that's very important for the better life. Now example is also given here, like we should have compassion for the poor. Yes, we should have compassion for the poor. The empathy between the two women were obvious. दो women के बीच में सहानुभूति होना तो ये बहुत आम बात है ना, सिंपैथी हो ही जाती है. He was allowed to go home on compassionate ground पर मतलब दया ग्राउंड पर उनको घर जाने की अनुमति मिली, because he was suffering, right? And due to that compassionate grounds he was allowed to go home. Nurses must be empathetic. Nurses कैसी होनी चाहिए? empathetic होनी चाहिए, जिसमें दया भाव बहुत होता है ना. She has empathy, she is empathetic. ठीक है, तो आप इसे यूज़ करेंगे हैज़ हैव के साथ, इसे यूज़ करेंगे इज हमारे वाज वर्ड के साथ. ही इज़ compassionate but he has compassion. He is empathetic, he has empathy. This way. And the proverb today is beggars can't be choosers. beggars choosers नहीं हो सकते. Meaning if you are in a bad situation and someone offers to help you, आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और कोई आपको हेल्प करने के लिए बोलता है, तो यू हैव टू टेक वट एवर दे गिव यू. जो भी हेल्प वो आपको देते हैं, जो भी आपको देते हैं वही आपको ले लेना होता है. एंड शुडंट आस्क फॉर मोर. आपको कुछ और नहीं मांगना है या कोई ऑप्शन नहीं मांगना है, बिकॉज बेगर्स कांट बी चूजर्स. बुरे वक्त में कोई हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए, कोई तैयार हो जाए, दैट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट. सो फ्रेजल वर्ब्स टुडे इज कम अबाउट. चेंज करते जाएंगे, मीनिंग विल चेंज. लाइक कम अबाउट सिंपली मीन्स द मीनिंग इज टू हैपन और टू अकर. घटित होना है ना, कोई चीज़ होना. जैसे हाउ डिड दीज लॉसेज इन योर बिजनेस कम अबाउट. ये कैसे हुआ, आपके बिजनेस में इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ. हाउ डिड इट हैपन, तो हाउ डिड इट कम अबाउट. यस, कम अक्रॉस का मतलब मीट बाई चांस. टू मीट और फाइंड, कोई चीज़ अचानक से मिल जाना है ना, और कोई चीज़ किसी से अचानक से मिलना. यस्टरडे while taking a walk in the park, I came across a childhood friend of mine. And I talk about come by. Come by simply means to obtain something either by chance or by making an effort. कोई चीज़ को प्राप्त करना either by chance or by an effort. Like it is difficult to come by totally unadulterated food. Unadulterated food को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है. Maximum food is adulterated. Now come off का मतलब होता है to succeed, means सफल होना. To take place will also be the meaning of come off. Like you can see the example will be like the deal for the house did not come off. Yes, the deal
for the horse did not come off in spite of my best efforts. मेरे best efforts के बावजूद जो घर की डील थी वो सफल नहीं हो पाई, मतलब हो नहीं पाई, complete नहीं हो पाया. Did not come off. That's a good word. Come round. Come round का मतलब क्या होगा? Come round simply means to accept an opinion suggested by someone. किसी के द्वारा दिए गए सजेशंस को एक्सेप्ट करना या ओपिनियन को एक्सेप्ट करना, राइट? सो कम राउंड. ही टुक सम टाइम टू कम राउंड बट नाउ ही इज़ वन ऑफ माई biggest supporters. Like whatever suggestions I had given, he did not accept it that very time. He took some time to come round, means to accept, but now he is one of my biggest supporters. I hope all the words are clear. So see you in the next video. Thank you.